हम लोगों ने SVM स्टार्ट किया था. What is SVM? It's nothing but a linear classifier. Okay, but we can, as we discussed, we can use SVM. It's a linear classifier, but we can use it as a non-linear classifier also. Okay, but consider that is actually a linear classifier. So, like what we have to learn in SVM. So, as a conclusion of this slide, we have to actually learn a single line in SVM, and that single line is nothing but an SVM. That is actually known as an SVM. Okay, so here we have actually this single line. We have this single line that is actually known as an SVM. Okay, what is the general formula for that? The general formula for that is actually WIXI, otherwise W into X plus B equals to 0. That's the general formula. So this is the general formula. W into X plus B equals to 0. But W into X, तो उसका हम लोग को लास्ट में समेशन करना है. So sigma I equals to 1 to N Xi Zi, or the Xi Wi plus B is equals to 0. What is X? It's nothing but a given attributes. It's an attribute or feature of the given point. Okay, so we have not to worry about X. We have to just calculate. Actually, we have to just find out the W and B. Okay, so like that's the how to find out the W and B. So guys, for that we have to just develop an SVM. So this line is actually known as SVM, and the formula of that line will be actually Wx plus B equals to 0. X is nothing but a featured value. X is nothing but an attribute value. So whenever you will just find out the line, whenever you will just find out the SVM, guys, you will get actually W and B. But as we know, there are lots of possibilities of this. There are lots of different lines. Okay, there are lots of different lines which we can find when we try to just solve the like linear classifier, otherwise this problem by using SVM. So we will get more than one lines actually. Okay, and from each and every line we will get actually W and B. So what will be the next point? Please find out the optimized W and B, in short, best of W and B. Why we have to find out the best W and B? Because we want to just we want to just maximize this margin value. We want to just maximize this margin value. So we want to just maximize this thing. Okay, so that's nothing but in margin. We want to maximize this. Okay, so for that, what we have to do, we have to find out best W and best B. We have to find out the optimized value of W and B to find out, otherwise to maximize this M. So that was the last thing we learned in a last session. So I hope यहाँ तक clear है सबको. Now after that, one more thing we learn and how to compute actually M. So to maximize the M, to maximize the M, we have to just formulate the M in the context of W and B actually. So actually after finding the SVM or after finding the actually best line, we will have actually line formula. And what is that line formula? That will be actually Wx plus B equals to 0. That will be the formula. After that, whatever the query point is there or whatever the testing point is there, we have to just apply. We have to just put the value of that query point or testing point. Attribute in the sense what? We have to just put the value of X. X in the sense what? That's nothing but an attribute or query point. So whenever the query point appears, it has some features. We have to put that features in this equation. Okay, actually we actually get the value of W and B. ओके SVM मिलने का मतलब क्या हुआ, हम लोग को W और B मिल चुका है. जब भी क्वेरी पॉइंट आएगा उसका X वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, we will get either positive value or we will get actually a negative value. So अगर आपको positive value मिल रहा है, that means what, like that point will have this type of classifier. In short, we can say that point it's actually +1 class on. Otherwise अगर आपको negative answer मिल रहा है, that means that point actually appears below the actual SVM. Okay. And what we did after that, हम लोगों ने इसको और कुछ solve करने की try की थी, and finally we had actually this formula. So margin is equals to 2 upon root of W into D, W into W. Guys, यहाँ तक कोई problem हो तो आप बोल सकते हैं. So that's nothing but in margin width. That's nothing but in margin width. यहाँ तक किसी को कोई issue है? मौलिक सर, विजय सर, पृथ्वी सर. Okay, fine. So now the next thing is SVM optimization. The next thing is SVM optimization. Now what is optimization? Optimization is I want to find out the max best value actually. So from the last slide, हम लोग को इतना कुछ finalize हुआ था कि what is the margin formula? Margin formula is equals to 2 upon under root of W into W. That is the margin width.
Okay, why we have to find out the margin width? Because maybe some noisy data is there in a testing point or some noisy data, yeah, in query point. So अपना classifier का accuracy maximum होना चाहिए, so that हम लोग को हो सके उतना margin width maximize रखना है. Okay, so that was the thing. Now for that what we have to do, up to this हम लोगों ने discuss किया, उस हिसाब से अगर देखें तो अगर मार्जिन विथ मैक्सिमाइज करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को एक्चुअली सबसे पहले W और B फाइंड आउट करना पड़ेगा. Otherwise we have to guess the value of W and B so that all the data points are in correct half planes. मतलब जो भी हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास टोटल यहाँ पे 12 डेटा पॉइंट्स है, 6 on a above the SVM and 6 on a below the SVM. ओके तो जब भी हम लोग ये W और B का वैल्यू कंप्यूट करें, W और B का वैल्यू फाइंड आउट करने से गाइस हम लोग को एक्चुअली SVM मिलेगा. ओके दिस लाइन वी विल गेट. तो SVM मिलने का मतलब हम लोग को ऐसे W और B चूज करने की जैसे लाइक हाफ ऑफ द पॉइंट्स, अदरवाइज जो भी उसका एक्चुअल वैल्यू है पॉइंट्स का, वो या तो लाइन के अपर डायरेक्शन में रहे या बिलो रहे, या तो लाइन के अबव रहे या तो लाइन के बिलो रहे. Okay, so compute whether all the data points are in the correct half planes. Correct half planes in the sense what? Right now we are working with the supervised machine learning. That means we have a class column. Otherwise we have a labeled column. Okay, so हम लोग को तब भी तो पता ही था कि लेबल मतलब कोई भी क्वेरी पॉइंट एंटर हुआ या कोई भी ट्रेनिंग पॉइंट एंटर हुआ तो उसका लेबल्ड वैल्यू क्या है. So according to that label value हम लोग को ऐसा कुछ W and B रखना है कि वो पॉइंट अपने करेक्ट प्लेन के अंदर है, करेक्ट हाफ प्लेन के अंदर है, या तो अबव या तो बिलो. Okay, and what we have to do next, we have to just find out a margin width. Now on the base of this W and B हम लोग को actually margin width compute करना है. So here we have a formula of M in the rest with the respect of otherwise W and B. B is not available, but you can say that it's in the reference of W and B actually. Okay, now consider we have actually R data points. In this example we have actually 12 data points, but consider there are R data points. So for each and every data point we will have two things. The first thing is nothing but attributes, मतलब properties. Let I say मेरे पास actually iris data set है, तो iris data set के अंदर हमारे पास 4 attributes थे, sepal length, sepal width, petal length, petal width. All these data points are known as X. Okay, and guys, we are in a supervised machine learning. That means all the data points will have actually class label. Okay, class value actually. Okay, so actually अगर आपके पास R data points है, then we can say that we have xk and yk. What is that xk? X in the sense it's nothing but an attribute. So here we can say that okay, we have two attributes actually, x1 and another attribute it's nothing but an x2, because we are working with the binary classifier right now. So we have two values, x1 and x2. And what about that yk? So yk here, like as per the equation, yk will be a -1 or yk will be a +1. Okay, so here in this case we have actually two data points, otherwise two attributes for each and every data points. Consider you have R data points, but in R data points we have only two attributes, that is x1 and x2, and we have two class labels actually, +1 and -1. Why I'm just considering xk and yk, because that's nothing but a, like consider you have actually R points, but from the R points let I say I have kth point, मेरे पास टोटल R पॉइंट्स है या टोटल 10 पॉइंट्स है, उसमें से फिफ्थ नंबर के पॉइंट की बात कर रहा हूँ. ओके, सो वी विल हैव एक्चुअली x5 and y5. x5 मतलब attributes of the fifth data point. Okay, and yk in the sense what, actually labeled value of the kth point. Okay, so that's that. So where yk will be actually plus or minus one in the sense in this case we have only two class terms, +1 and -1. Okay, it may be anything actually, because it may be anything in the sense हम लोग क्लास वैल्यू पे काम काज कर रहे हैं, so y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. लाइक ऐसे अगर आपके पास बाइनरी क्लासिफायर में वर्क कर रहे हो then yes or no, true or false, something like that. So here I just consider +1 and -1, it may be anything. Okay, so now अगर guys मुझे ऐसा कुछ क्लासिफायर डेवलप करना है जो ये चीजें मुझे कंप्लीट करके दे, मुझे एसवीएम में ऐसा कुछ करना है कि मेरे जो भी पॉइंट्स है वो अपने राइट हाफ पेन में रहे. हाफ पेन मतलब मैंने इस तरीके से लाइन डेवलप की है, एसवीएम इस तरीके से चूज किया है कि लाइक कंसीडर हाफ ऑफ द गाइज आर, अदरवाइज मैंने पूरे प्लेन को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ. वी कैन नॉट से इट्स अ हाफ ऑफ द पार्ट, आप बोल सकते हो 70-30 या 60-40, एनीथिंग विल बी देयर. ओके, बट हम लोगों ने इस तरीके से रखा है, मान लो कि लाइक अपना हम लोग को एक्चुअली वर्किंग इस तरीके से करना है कि एसवीएम में इस तरीके से चूज करना है कि आपका पॉइंट अपने पर्टिकुलर प्लेन के अंदर मिले एंड मार्जिन विथ मैक्सिमम हो, ऐसा कुछ हम लोग को करना है.
So for that, let me just consider an example. हमारे पास टोटल r पॉइंट्स है, उसमें x के एंड y के पॉइंट हम लोगों ने, मतलब हर एक x के एंड y के अंदर दिस इज द वैल्यू ऑफ y के, मतलब हम लोगों ने क्लास लेवल फिक्स कर दिया. Now what we have to fix, we have to fix one more thing, that's nothing but in constraints. Okay, now how many constraints will be there and what should be the constraint? How many constraints will be there and what should be the constraints? I am talking about the constraints because मुझे actually margin width max करना था, and one more thing, I want to just assume the value of w and b. Okay, so guys, this will be the constraints value. This will be the constraints value. Now what is that? Can now consider, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि गाइस अगर आपका yk का वैल्यू 1 है, लेट आई वंस अगेन रिपीट, मेरे पास r पॉइंट्स थे, उसके अंदर हर एक पॉइंट के लिए मेरा yk का वैल्यू फिक्स था. व्हाट इज दैट yk वैल्यू? इट्स नथिंग बट एन क्लास वैल्यू, इट इज नथिंग बट एन लेबल्ड वैल्यू. तो आइदर मेरे पास वैल्यू +1 था और मेरे पास वैल्यू -1 था. ओके, नाउ कंसीडर, नाउ वन मोर थिंग, अगर मेरे पास yk का वैल्यू 1 है, मुझे w एंड b फाइनलाइज करना था. अगर मेरे पास yk का वैल्यू 1 है, दैट मींस व्हाट, ये जो इक्वेशन हमको मिला था SVM का wx plus b is equals to 0. But what is my requirement? अगर yk का वैल्यू 1 है, that means what, मेरा इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा, wxk plus b greater than equals to 1. And अगर yk का वैल्यू -1 है, then equation will be like wxk plus b less than equals to -1. Okay, why I'm talking about +1 and -1? +1 and -1 are nothing but a constant. I just focus that, I just assume that this is the land, there is no man. In short, ये एरिया के अंदर कोई भी पॉइंट्स नहीं है, मुझे मैक्सिमम मार्जिन चाहिए था. ओके, मुझे मैक्सिमम मार्जिन चाहिए था. तो इस एरिया के अंदर ये जो हम लोगों ने, जैसे ये एसवीएम जो बीच में अपना ब्लैक वाला लाइन है, ये देयर इज एक्चुअली एक्स लाइक इक्वेशन इक्वल्स टू 0. एंड व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे माइनस है, तो ये एरिया हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ रखा है. दैट मींस व्हाट, मुझे मैक्सिमम मार्जिन चाहिए था. Okay, so yk की वैल्यू के लिए, अगर yk का वैल्यू 1 है, then I will just consider this must be followed, और yk का वैल्यू -1 है, then this must be followed. What is the actual equation? What is that x? X nothing but an attribute. It's nothing but an attribute. तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्चुअली w और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो अगर yk का वैल्यू 1 है, then I will just put 1 over here. yk का वैल्यू 10 है, then I will just put 10 over here. मतलब मेरे पास जो भी w और b ऐसे मिले, ये इक्वेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 10 और यहाँ पे इक्वेशन की वैल्यू लेस देन 10 हो. सो दिस आर द कंस्ट्रेंट्स. मुझे इस तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शन सेट करना है. आई होप दैट्स क्लियर. सो व्हाट विल बी द ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया? व्हाट विल बी द ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया? बट ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया इज हो सके उतना हम लोग को इसको एक्चुअली मैक्सिमाइज करना है. ओके, इस विड्थ को मैक्सिमाइज करना है. एंड इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज दिस m, अगर आप इस m को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो इसका रेसिप्रोकेटल, इसका रिवर्स, इसका इनवर्स एक्चुअली मिनिमाइज होना चाहिए. मतलब इसका इनवर्स मतलब 2 अपॉन अंडर, सॉरी, इसको मिनिमाइज करना है. दैट मींस इसका इनवर्स अगर मैं फाइंड आउट करूं, देन w अपॉन w, सॉरी, अंडर रूट ऑफ w इन w डिवाइड बाय 2 मस्ट बी मैक्सिमाइज. ओके, ये एक्चुअली मैक्सिमाइज होना चाहिए. अगर मैं, सॉरी, एक्चुअली ये मिनिमाइज होना चाहिए. अगर ये मिनिमाइज हुआ तो इसका उल्टा, मिनिमाइज हुआ तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा. मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप m को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसका वैल्यू मतलब ये मैक्सिमाइज होना चाहिए, और ये मैक्सिमाइज होना चाहिए. दैट मींस व्हाट, दिस वन मस्ट बी मिनिमाइज्ड, दिस वन मस्ट बी मिनिमाइज्ड. ओके, तो डिवाइड में जो 2 लिखा है, जस्ट इग्नोर दैट, यू हैव टू मिनिमाइज दिस वन. ओके, यू हैव टू जस्ट मिनिमाइज w इनटू 10. दैट्स एक्चुअली अ फॉर्मुलेशन. सो ये हम लोग लास्ट सेशन में भी कंप्लीट कर चुके थे, बट थोड़ा और डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया. हम लोग को मिनिमाइज करना हो, सॉरी, हम लोग को मार्जिन मैक्सिमाइज करना हो, दैट मींस हम लोग को w into w को मिनिमाइज करना है. सो दैट्स नथिंग बट इन कंस्टेंट्स. तो अगर फॉर्मूला, इसको थोड़ा फॉर्मुलाइजेशन करें, दैट मींस व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? आवर ऑब्जेक्टिव इज प्लीज मिनिमाइज w into w. व्हाई वी हैव टू मिनिमाइज दिस w into w? बिकॉज़ वी वांट टू मैक्सिमाइज द विड्थ. व्हाई वी वांट टू मैक्सिमाइज द विड्थ? बिकॉज़ अगर हम विड्थ को मैक्सिमाइज करेंगे तो w की वैल्यू हम लोग को ऐसी मिलेगी कि ये कंस्ट्रेंट्स फॉलो हो जाएंगी. What is the constraint? Constraint is the sense आप xk की वैल्यू जब भी फाइंड आउट करें, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए if the labeled value is 1. ओके, और अगर आप xk की वैल्यू पुट करें और अगर आपका एक्चुअली yk लेस देन yk इक्वल्स टू -1 है, yk इक्वल्स टू -1 है, मतलब kth पॉइंट के लिए लेबल्ड वैल्यू और क्लास वैल्यू -1 है. दैट मींस व्हाट, आपका इक्वेशन, आपका कंस्ट्रेंट्स ये होना चाहिए कि आपके पास जो भी xk की वैल्यू पुट करे तो आपको इक्वेशन -1 से लेस देन वैल्यू रिटर्न करे. So now the thing is, so that's nothing but an actually my objective. That's nothing but in my objective function. ये मुझे अचीव करना है.
minimize the w into w. Guys, अगर ये नहीं समझ में आता, that's fine, it's not important one. Okay, but now here we have actually w square, so that it is known as quadratic objective function. That is actually known as quadratic objective function. Now, why we want to do this? What is the target? Why we want to do this? Because we want to just calculate the linear constraints. So this is the constraints actually. We want to just compute this. Okay, these are the constraints. हम लोग इसके लिए w की value minimize करना चाहते हैं. Now, what is the constraint? So this is the constraints. This is the constraint. ये अभी हम लोगों ने discuss किया. So that is the thing. W into xk plus b greater than equals to 1 if yk equals to 1. W into xk plus b less than equals to -1 if yk is equals to -1. So that is the main concept. Okay, ये मेरा main concept है. मेरा actually formulation करें अगर हम लोग हमारे linear SVM equation को, then guys we want to just minimize w into w, and that's nothing but a quadratic objective function. So we want to just optimize this thing. So now what is the actual problem? Let me just try to solve this. Okay, that's our optimization problem. So let me just try to solve this. So we want to just find out w and b. That is the main concern. And for that, we want to just minimize this thing, w into w. So what is the w? Guys, here w and x are nothing but in vectors. Okay, w and x are nothing but in vectors. So do not worry about that. We are going to just multiply this. W into w in the sense that's w transpose w. But if this is not transpose, that's nothing but in multiplication, w into w. So we want to minimize that. Okay, we want to minimize that. Now consider you have n points. So like here for all xi and yi, I equals to 1 to n. Now I just write down a general equation. So how to compute this? In a previous slide, we have actually two equations. Okay, तो ये मेरे पास दो इक्वेशन थे, उसको मैंने जनरलाइज किया. यहाँ पे हम लोगों ने इसको जनरल इक्वेशन भी लिखा हुआ. So what is the general equation? Now consider here. Okay, now let me just work on this. So here we have wtxi plus b greater than equals to 1. Here the equation is wtxi plus b greater than is equals to 1. But in the previous slide, we have actually greater than equals to 1 as well as less than equals to -1. हमारे पास यहाँ पे दो चीजें थी, just focus. हमारे पास यहाँ दो चीजें थी. But in the next slide, हम लोगों ने सिर्फ greater than equals to 1 लिखा. How to compute this? ये कैसे लिया? So guys, what I did, मैंने इसको, हम लोग को actually ये पता था कि maybe the value of y will be +1 or -1. Maybe the value of the y will be +1 or -1. दोनों में से एक ही वैल्यू होनी है, because हम बाइनरी क्लासिफायर में वर्क कर रहे हैं डायरेक्टली. ओके, सो हम लोगों ने एक काम किया, इसको हम लोग yi के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ yi इन द सेंस पर्टिकुलर ith वैल्यू के लिए, लेट आई से आई हैव n पॉइंट्स, अदरवाइज लेट आई से आई हैव 12 पॉइंट्स. तो i की वैल्यू अगर 3 लो, दैट मींस थर्ड पॉइंट. i की वैल्यू 7th लो, दैट मींस 7th पॉइंट. तो हो सकता है 7th पॉइंट के लिए yi का वैल्यू +1 हो एंड थर्ड पॉइंट के लिए yi का वैल्यू -1. तो जब यहाँ पे आप +1 रखोगे, देन योर इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस. wt xi plus b greater than equals to 1. y greater than equals to 1. यहाँ पे मैंने yi की वैल्यू 1 रखी है. This is the value of y. Okay, अगर मान लो मैं ऐसा बोलूँगा, okay, now the value of I is equals to 7 here. Okay, so here we will just put 7. तो x का भी वैल्यू 7 पॉइंट करना है. Now consider I की वैल्यू जब 3 थी, तब मेरे पास yi की वैल्यू, in short y3 की वैल्यू -1 थी. So what we can write down, -1 multiplied by w3x3 plus b greater than equals to -1. ओके, नाउ इस -1 को यहाँ से रिमूव करने के लिए मैं दोनों साइड -1 से रिमूव करूँ, और जब -1 से आप दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करें, और -1 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू विल बिकम लेस देन इक्वल्स टू. So this equation will be something like this. मैं इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे -1 से मल्टीप्लाई किया. So left hand side पे मेरे पास -1 था, -1 that will be +1. So my equation will be wtx3 plus b, and on right hand side I have 1. So 1 is multiplied by -1, that will be -1. Then greater than equals to sign will become less than equals to. जब आपके पास y की वैल्यू -1 थी, then your equation is actually wtxi plus b less than equals to -1. Similar to the previous slide. Okay, जब y की वैल्यू -1 है, तब मेरे पास इस इक्वेशन में -1 आना चाहिए. I hope that's clear. So what we did, so here that is, अगर y का वैल्यू आपके पास -1 है, then इक्वेशन में आपके पास less than equals to -1 आना चाहिए.
So that's that. So we compute that. So in short, अगर मैं इसको general equation में लिखना चाहता हूँ, so like I want to, this is my primer problem, that is my primer problem, and that's nothing but an quadratic. That's nothing but an actually quadratic objective function, or you can say the linear equation. So what's the solution? हम लोगों ने इसमें क्या लिखा? We want to find out W and B such that W of B, otherwise, sorry, like function of W is equals to W into W is minimized, and for all xi yi where yi x yi wt xi plus b greater than equals to 1. ओके, तो ये जनरल इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पे हमने जनरल इक्वेशन लिखा है, बट हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड से इक्वेशन डिराइव किया हुआ है, नथिंग एल्स. हमने अपना इक्वेशन प्रीवियस स्लाइड से डिराइव किया, नथिंग. सो आई होप दिस इज क्लियर. But now, guys, if you have actually quadratic problem, then optimization of the quadratic problem is not possible. Actually, you cannot solve this. Okay, you cannot solve this if you have actually if you have a quadratic problem, then you cannot optimize that. Then what we have to do, we have to just replace this equation by introducing some more variables, some new variables, that's actually alpha 1 to alpha n in the place of w and b. Where is the b? The b is also the value. ओके हम लोगों ने इक्वेशन देखा था, देन b इज आल्सो द वैल्यू, हम लोग को उसका भी यूज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द m एक्चुअली. बट इन इक्वेशन दैट्स नॉट अपीयर्ड, but that is important. In some cases it's important. So just consider, if you have a quadratic problem, if you have a quadratic equation and you want to optimize that one, if you want to optimize a quadratic equation, then that's not possible. You have to, what you have to do, you have to just introduce some new variables in the place of w and b. So here I just introduce some new variable in the place of w, and that's nothing but an alpha 1 to alpha n. Why alpha 1 to alpha n? For each and every variable of value of x, I just introduce them. Now my function will become, my function was actually of w. Okay, so my function will become actually of alpha, and this will be some complex equation. So we have to just replace this equation, or just replace this equation by this one. Okay, do not worry about that. Now what about the xi and xj? What about xi and xj? And what about yi and yj? So these are nothing but an attributes, and yi and yj are nothing but an actually class level. We have not to focus on that. Okay, we will just discuss all these things and actually control tricks or non-linear problems. But just consider one thing, we have to just remove this w and introduce alpha to solve our minimal problem or primal problem. That's the thing. Okay, and for all this alpha, actually the value of alpha is greater than or equal to 0. Just consider this thing. Okay, so to just solve this equation, to solve, just find out the value of w, we have to just introduce a new equation, and this is the complicated one. Okay, this is a little bit complex, just ignore it right now. But this thing we will just learn in actually non-linear problem solution, otherwise kernel trick. But now guys, what we have to do in real examples, so whenever we are using Python, we have a function that's nothing but a quadratic problem, and the function name is actually quadratic problem. Okay, and here it is qp. So we have to just pass the value of x, it will just compute, we have to just pass out the data, it will just compute w and b. So आपको w और b return कर देगा. We have not to worry actually, neither we have to learn this one nor we have to learn this one. Neither the thing we have to learn. But अगर आप mathematics की बात करें, then you cannot solve this quadratic equation by actually optimization problem. By the optimization way, you have to just replace the w by introducing some new variables. Okay, and this is the way. So आप इसको Google भी कर सकते हैं एक बार, but we will learn in upcoming sessions. Okay, and in Python we have functions, so we have not to worry about it. This is pure maths. But in interview, someone will ask this question actually: what is the actual equation? What is the actual equation? So this is the answer. Okay, what is the actual equation? Otherwise, what is the formula for the linear SVM? What is the formula for the linear SVM? This is the concept. So I hope you have the कोई problem नहीं. So that is nothing but an optimization